Hello students, class 8. We are covering this topic, some more interesting patterns, and in this topic we have the sixth point, some more patterns in square numbers. And this point number 6 is on the page number 95 of NCERT book. Fine, so we will see some patterns. I am taking some numbers like 1, 3, 6 and 9. So at first we will see the patterns for number 1. So as we know, 1 multiply 1 is equal to 1. We know this? Fine. So patterns for 1. Patterns for 1. So 1 multiply 1 is equal to 1. If I am taking like 1 2 times, multiply 1 and 1. Fine. So we can say it is a square of 11. Now I will teach you how we will find the square of 11 without multiplication. ठीक है, बिना मल्टीप्लाई किए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं 11 का स्क्वायर. So see, here we have number of 1 2 times. Number of 1 2. So हम लिखेंगे पहले 2. ठीक है, 2. अब ये जो दो 1 है, now we have 2 1, तो एक इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया. Understood? So I think you understood. Now if I am taking like a number of 1 3 times, यहाँ मैंने 2 टाइम्स लिया है. अगर मैं यहाँ ले लूँ 1 1 1, मल्टीप्लाई 1 1 1. Fine. So we can say it is a square of 111. Now here we have number of 1 3. So we will write here at first 3. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से पहले क्या आता है, 3 से पहले आता है 2 and 1, and वही 2 1 हम इधर भी लिख देंगे. Understood? If I am taking number of 1 4 times, so 1 2 3 4, multiply again number of 1 4 times, 1 2 3 4. So it is a square of 1 1 1 1. Fine. Wait a second. Fine. So देखो यहाँ पे number of 1 कितने हैं, 4. So we will write here 4. अब 4 से पहले क्या आता है, so 3 2 1, और 4 के बाद भी हम वही नंबर्स लगा देंगे 3 2 1. Understood? Now suppose if I am taking number of 1 5 times, 1 2 3 4 5, again 1 2 3 4 5. So it is square of how many times, 5 times. ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर हो गया. अब देखो, now see how many times we have here 1 5 times. So we will write here 5, और 5 के पहले क्या आता है, 4 3 2 1, एंड यही नंबर्स हम लिख देंगे 5 के बाद, 4 3 2 1. तो ये हमने क्या किया, ये हमने सीखा कि विदाउट मल्टीप्लिकेशन हाउ वी कैन फाइंड आउट द आंसर इजीली. ठीक है, तो ये क्या है, ये एक पैटर्न है. फाइन. अगर आप अब इसी तरह नंबर ऑफ 1 यू विल टेक 6 टाइम्स, नंबर ऑफ 1 यू विल टेक 7 टाइम्स, एंड आप 7 टाइम्स जैसे आपने नंबर ऑफ 1 लिया और अगेन उसको मल्टीप्लाई कर दिया 7 टाइम्स 1 लिख के. ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट. कैसे करोगे आप लोग, सो सपोज आई एम टेकिंग 7 टाइम्स, आई एम अगेन teaching you here 1 2 3 4 5 6 7. Fine. 1 2 3 4 5 6 7. So इसका स्क्वायर हो गया ना ये. कितने टाइम्स है, वी हैव 7 टाइम्स, 3 4 5 6 7. So how many times we have 1 here, 7 times. Now before 7 we have numbers 6 5 4
3 2 1 और यही नंबर्स हम लिख देंगे 7 के बाद. So 6 5 4 3 2 1. So without multiplication we calculated these sums. So ये क्या है? ये एक पैटर्न है. So I think you understood patterns for 1. So note down in your notebook. After that we will see patterns for 3. Now we are going to see patterns for 3. Fine. So as we know, 3 multiplied 3. 3 multiplied 3 is equal to, we can say 0 9. Fine. अगर हमें 2 digits लिए तो वैसे तो 9 होता है, बट उसके पहले 0 लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता. Now patterns for 3. So suppose if I am taking number of 3 2 times. 3 multiply 30. Fine. So it is a square of 33. Now we have here 2 digits. So if we will square of any 2 digits number, so we will get answer in 4 digits. अगर हमने 2 digit number का square किया तो हमें answer कितने में मिलता है? 4 digit में. So we will get the answer of this in 4 digits. So 1 2 3 4 4 digits. Right now we don't know what is the answer. Now we will make the groups. 2 digits in left, 2 digits in right. ठीक है, हम grouping कर लेंगे. ये जो 2 digits होंगे, these are in left and these 2 digits in right. Fine. Now square of 3 0 9. So 0 and 9. Like this we will write. Now after 0 we have which number? 1. So we will write here 1. And before 9 we have which number? 8. So we will write here 8. Fine. I think you understood. So the answer will be 1089. If you want to multiply, so you can check this answer, cross check. Now suppose I am taking number of 3 times. So 3 multiply 3. So it is a square of 3. Fine. So okay, we have 3 digits. तो अगर हमारे पास 3 digits हैं, and if we will do square of any 3 digit number, so we will get the answer in 6 digits. अगर हमने 3 digit वाले number का square किया तो हमें answer कितने digit में मिलेगा? 6 digits में. So at first time I think here how many digits? 1 2 3 4 5 6. Now we will make groups. 3 digits in left and 3 digits in right. So देखो 3 digits इधर हो गए, 3 digits इधर हो गए. Now square of 3 0 9. So we write here 0 and 9. And after 0 we have which number? 1. So at these 2 places we will write here 1 and 1. And before 9 we have which number? 8. So at these 2 places we will write 8 and 8. Fine. Similarly, suppose if we have number of 3 4 times. 1 2 3 4 multiply 2 3 4. So this is square of 3 3. Fine. So we have to square 4 digit number. अगर हमने किसी भी 4 digit वाले नंबर का स्क्वायर किया तो हमें आंसर कितने डिजिट में मिलेगा? 8 डिजिट में. So 1 2 3 4 5 6 7 8. Now we will make group 4 digits in left and 4 digits in right. So 1 2 3 4. ठीक है, मैंने participation कर लिया इसमें. Now see, square of 3 0 9. And after 0 which number we have? 1. So we will write here 1 1 1 at these 3 places. ठीक है. And before 9 we have which number? We have 8. So at these 3 places we will write here 8 8 8. So it's very simple. So I think you understood number of मतलब number जो होते हैं, number of times आप 3 कितने भी times ले लो, ठीक है. और अगर आप उसका इस तरह से स्क्वायर करोगे तो विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट मल्टीप्लिकेशन यू कैन फाइंड आउट द आंसर. सो ये क्या
क्या बन गया? It is a pattern. Fine, it is a pattern. So I think you understood patterns for 3. So note down in your notebook. After that we will see patterns for 6. So ये भी same ही है, ठीक है? We will see this. Now we are going to see patterns for 6. ठीक है? So it is also easy and it is same as we already understood about the patterns for 3. ठीक है? जो भी हमने सीखा था अभी इससे पहले वैसा ही ये सेम ही है. Now we will see how we will do this. 6 multiplied 6 is equal to 36. So if I am taking number of 6 2 times, means 6 multiplied 6. Fine. So if we will do square of 2-digit number, so we will get the answer in 4 digits. Fine. So 4 digits, 1 2 3 4, and now we will make groups, 2 digits in left, 2 digits in right. Fine. So 6 का square 36. Fine. Now after 3, which number we have? 4. And before 6, which number we have? 5. Like this. Fine. सब में ऐसे ही करना है. If you will take, so the answer will be here. This. ठीक है? You can also cross check. Now if I am going to take number of 6 3 times, so if we will do the square of 3-digit number, so we will get the answer in 6 digits. Fine. So we will make group 3 digits in left and 3 digits in right. Fine. So square of 6 36. After 3, which number we have? 4. So at these two places we will write here 4 and 4. Fine. And before 6, which number we have? 5. So at these places we will write here 5. Fine. So answer will be 4 4 3 5 5 6. You can cross check. Similarly here we have here 4 digits, means number of 6 4 times. ठीक है? So if we will do square of 4-digit number, so we will get the answer in 8 digits. So 1 2 3 4 5 6 7 8. Now we will make group 4 digits in left side and 4 digits in right side. So 1 2 3 4. We will do participation here. Fine. So square of 6 36. So 36. Now after 3, which number we have? 4. So at these places we will write here 4 4 4. And after it was after 3, and here before 6. So before 6 which number we have? 5. So at these places we will write here 5 5 5. So answer will be 4 4 4 3 5 5 6. So I think you understood. So इस तरह से कितने भी टाइम्स अगर आप नंबर ऑफ 6 ले लो, और उसका मतलब जैसे कि आपने अगर 5 टाइम्स लिया, 5 टाइम्स नंबर ऑफ 6, और अगर उसका स्क्वायर करते हो तो आपको इसी तरह से पैटर्न्स बनाने होंगे. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड. सो राइट डाउन इन योर नोटबुक. आफ्टर दैट वी विल सी पैटर्न्स फॉर 9. सो पैटर्न्स फॉर 9 अगर हम देखेंगे तो वो भी ऐसा ही होगा. ठीक है? सो नोट डाउन इन योर नोटबुक एट फर्स्ट. Now we have patterns for 9. Fine. So we will do the same. So square of 9 81. Fine. Now if I am taking number of 9 2 times, ठीक है, and if we will do square of 99. So अगर हमने 2 डिजिट वाले नंबर का किसी भी नंबर का स्क्वायर किया तो हमें आंसर कितने डिजिट में मिलेगा? 4 डिजिट में. फाइन. सो 1 2 3 4 4 डिजिट्स. नाउ वी विल मेक द ग्रुप 2 डिजिट्स इन लेफ्ट एंड 2 डिजिट्स इन राइट. फाइन. Now square of 9 81. So 81 we will write like this. Now after 8, which number we have? 9. So we will write here 9. And before 1, which number we have? 0. So 0 we will write here. Understood? After that, now we took here number of 9 3 times. देखो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? 9801. Fine. So here we have number of 9 3 times. So if we will do the square of 3-digit number, so we will get the answer in 6 digits. So 1 2 3 4 5 6. Now we will make the groups 3 digits in left side, 3 digits in right side. Fine. अब देखो square of 9 81.
8, which number we have? 9. So at these two places we will write here 9. And before 1, which number we have? 0. So at these two places we will write here 0. So answer is fine. Now similarly here we have 9 4 times, and if we will do square of 4 digit number, so we will get the answer in 8 digit. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fine. Now we will make the groups 4 digits in left side and 4 digits in right side. So I will do the participation here. Now square of 9, 81. So 81. Fine. After 8, which number we have? 9. So at these three places we will write here 9, 9, 9. And before 1, which number we have? 0. So at these three places we will write here 0, 0, 0. So the answer will be 9, 9, 9, 8, 0, 0, 0, 1. फाइन. सो इस तरह से आप नंबर ऑफ 9 कितने भी टाइम्स लो और अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो आपको विदाउट मल्टीप्लिकेशन आंसर ऐसे ही लिखना होगा. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड पैटर्न्स फॉर 9. सो ये क्या बन गया? एक पैटर्न बन गया और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वी विल सी in exercise. Fine. And in next session we will see another patterns. हम कुछ और patterns सीखेंगे बनाना. Fine. So note down in your notebook.